In this video, we will discuss about the law of large number. So, law of large number. So, we state this law of large number as law of large number is an interesting consequence of Chebyshev inequality. Chebyshev inequality. Now, we write down this as let x1, x2, x3, and so on, xn be mutually independent random variables. Independent random variables. अब यहाँ पर भी सेम केस होगा विच में भी डिस्क्रीट डिस्क्रीट हो सकते हैं और कंटिन्यूअस, इसमें भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ईच हैविंग फाइनाइट मीन. अब ईच मतलब ईच रैंडम वेरिएबल फाइनाइट मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. ओके, सो हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं एन रैंडम वेरिएबल्स के लिए. ओके, सो देन we take the sum Sn. So sum of the random variable we write down in this form: x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn. अब यहाँ पर हमारा n क्या होगा? n रिप्रेजेंट करेगा 1 2 3. ओके, जब जनरली हमें xn लिख देंगे इसको. तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n tends to infinity probability p of average of random variable means Sn upon n minus finite mean which is mu greater than equal to epsilon is equal to 0. ये क्या है हमारा? ये तो फाइनाइट मीन हो गया म्यू कंप्लीट उसका रैंडम वेरिएबल्स का, और ये क्या है? एवरेज. दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू. so we take the so when we have the sample size, once we have the sample size which is large, so then we are nearly to the mean mu, nearly to the mean mu. Okay, so then probability will be 0 when we apply n tends to infinity. So इसको हमें कैसे डिफाइन करना होगा? इसको हम लिख सकते हैं कि वी आर जो एस एन अपॉन एन है वो क्या है हमारा? वो तो एक अर्थमेटिक मीन है, इज ए अर्थमेटिक मीन. और अर्थमेटिक मीन और जी हमारा हो गया फाइनाइट मीन म्यू हो गया एक्चुअल मीन ऑफ द सैंपल. अर्थमेटिक मीन म्यू ऑफ द random variable x1 x2 x3 and so on xn. Okay, so this theorem basically we write down in theoretical way. This theorem states that the probability of arithmetic mean Sn upon n differing from its expected value, differing from its expected value mu by more than epsilon approaches to 0
approaches to 0 as n approaches to infinity, n tends to infinity. Okay, so here we have two cases. One for strong law of large number, second we have weak law of large number. So a stronger result which we might expect to be true, that is, तो क्या हो सकता है कि अगर हम लिमिट n tends to infinity कर रहे हैं Sn upon n पर gives us mu, but this is actually false. This is actually false. Actually false. So we can prove that. We can prove that limit n tends to infinity, Sn upon n is equal to mu with probability 1. So with probability 1. So this result is called strong law of large number. So we can say that this result is called strong law of large number. Strong law of large number. If we get this one, so strong law of large number. So that means SLLN, strong law of large number. Otherwise, जो previous result होगा, so previous result will be called the weak law of large number. If the previous result is called weak law of large number. Weak law of large number. That means WLLN. तो कौन सा हो गया आपका वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर? जो प्रीवियस रिजल्ट का मतलब, तो अगर सिंपली हम ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सो दिस इज द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर. अगर हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn upon n is equal to mu with probability 1, so then this law is called the strong law of large number, otherwise weak law of large number. So this is the statement of the law of large number. Now we shall prove this law of large number. So for proving this, so we have expectation, that means mean, because in the statement we have considered that the mean of each random variable is equal to mu. So we write down this as is equal to and so on, or we have a xn. So mean of each random variable, but expected value is mu, and similarly variance of each random variable, variance of x1, variance of x2 is equal to variance of x3 is equal to variance of xn, which is equal to sigma square. So now we calculate expectation of Sn upon n. अब लॉ ऑफ लार्ज नंबर के लिए हमारा Sn upon n के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो Sn upon n, Sn क्या है? सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल. तो सम ऑफ द रैंडम वेरिएबल, this can be written as x1 plus x2 plus x3 plus and so on xn upon n. अब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है. एक्सपेक्टेशन ऑफ सी इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं? सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn. और यहाँ पर भी फिर हम अगेन यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन. तो एक्सपेक्टेशन की जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2
or plus expectation of x3 or and so on or plus expectation of xn. ओके, और each वैल्यू क्या है हमारी, दिस इज म्यू प्लस एंड सो ऑन और म्यू, तो n टाइम्स म्यू, तो जब n टाइम्स म्यू है तो इनका सम क्या होगा, सम विल बी n म्यू, तो सम विल बी n म्यू, सो दिस गिव्स अस म्यू, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो दिस गिव्स अस म्यू. अब सिमिलरली वी कैलकुलेट द वेरिएंस, वेरिएंस किसका, Sn का, तो वेरिएंस ऑफ Sn, तो वी राइट डाउन वेरिएंस ऑफ x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn. So this can be written as variance of x1 plus same property, variance of x2 plus variance of x3 plus and so on or plus variance of xn. So each having variance sigma square, random variable. So sigma square plus sigma square plus sigma square प्लस एंड सो ऑन और प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो क्या सम हो जाएगा इसका, एन सिग्मा स्क्वायर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट, सो दैट, तो जब वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे किसका, एस एन अपॉन एन का, तो एस एन अपॉन एन का वेरिएंस, तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूले से, वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एस एन. सो दिस कैन बी रिटन एज वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एस एन, क्या है हमारा, एन इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू आएगी हमारी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन. Okay, so this gives us sigma square upon n. So now here we use the Chebyshev inequality. So by using Chebyshev inequality, तो Chebyshev inequality क्या कहते हैं, P of x minus mean mu greater than equal to epsilon और less than equal to variance upon epsilon square. अब यहाँ पर हमने x को किससे रिप्लेस करना है, एस एन अपॉन एन से करना है. जब एस एन अपॉन एन से करोगे तो ये जो वेरिएंस है वो किसका है, x का रैंडम वेरिएबल का. जब x को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एस एन अपॉन एन से, तो हमें किसका वेरिएंस लिखना होगा, एस एन अपॉन एन का. तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन, दिस लेस देन इक्वल टू, और उसका वेरिएंस क्या है हमारा, इसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज एस एन अपॉन एन माइनस मीन म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन और लेस देन इक्वल टू sigma square upon n into epsilon square. Okay, so this is by Chebyshev. Now we take limit as n tends to infinity. When we take limit as n tends to infinity, so this can be written as, now, so this can be the probability p of Sn upon n माइनस मीन म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू, तो जो एलएचएस में हमने लिमिट ली है सेम हमें कहाँ यूज करनी है, आरएचएस के लिए भी, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर. तो दिस गिव्स अस, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी इंटू समथिंग, और इन्फिनिटी इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. तो दिस गिव्स अस इन्फिनिटी और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो. So we have proved the law of large numbers. This equal to zero. So hence we can say that limit n tends to infinity, probability p of Sn upon n minus mean mu greater than equal to epsilon gives us the zero. So this is the proof of law of large number. Hope you understand this.